Hello everyone, good evening and welcome to my channel Aptitude Club. This is the second part of CAT 2022 QA solutions of slot 1. I had said earlier that I'll be taking the entire 22 questions of slot 1 in 3 parts. So this is the second part. If you have missed the first part and you are watching this video for the first time, I'll pin the link of the first video in the I section. You can check it out. I'll also provide its link in the description of the video. So do check it out and we'll also come up with a part 3 for slot 1. Accordingly, for each slot I'll be like breaking it up in 3 videos. So entire 22 questions of every slot will be covered in 3 videos each. So if you're new to my channel, do subscribe to the Aptitude Club channel, and if you like the videos, do share it with your friends, and it will help you in your CAT preparation journey, because I post videos regularly and every day you will get some content which will be helpful in your CAT preparation journey. So without further delay, let us begin. So yesterday we solved till question number 7. Today we'll be beginning from question number 8. Let's take a look at this one. Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of the number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5. What I'll suggest is no matter if you are prepared or you are not prepared, you are just starting your preparation, or maybe you would watch this video after 6 months, do pause the video, try the question yourself first, and then look at the explanation. Okay? And if you totally have zero idea, you can go for the explanation. If you don't understand any concept, maybe you are not familiar with that chapter, and maybe that is why you are struggling a little bit. Once you read that chapter, then you will understand how and in what manner we are approaching the question. Okay, it's not a like concept explanation. It's basically a previous year question solving video. So maybe there would be a few questions that you can feel it's a little challenging, but that's okay. Okay, that's okay. Absolutely, I'll try my best to explain in the simplest possible way, but then there will be a few questions where we need to know the formulas or the concepts behind that. Only then we will find it comfortable. But at least by solving such questions, if you are at an early stage of your preparation, you will get an idea. Okay, this is what I need to study in the next 6 months or 8 months, and these are the things that I need to cover. Or those kind of stuff, you will get an idea about the roadmap that you want to go through in the next 6 8 months or 10 months of your preparation. So now Pinky is standing in a queue. Suppose this is Pinky. Now there are few people who are ahead of Pinky, and there are a few people who are behind Pinky. Now the ratio of the number of people who are ahead and who are behind Pinky is 3:5. So if this is 3x and this is 5x, so what is the total number of people? Total people in the queue. It is 3x plus 5x, and Pinky herself is one person. So I can write it as 8x plus 1. Question is saying if the total number of persons in the queue is less than 300. Very simple question. Inequality का वो भी linear inequality. 8x plus 1 is less than 300. तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. 8x is less than 300 minus 1, 299. Or I can write x is less than 299 divided by 8. Or you will get x less than 8 3s are 24, 59, 8 7s are 56, 30, then 8 to 37 point, 30 to 8 3, then 7, then 5, 37.375. But x cannot be 37.375, x has to be an integer. Hence for maximum, तुम्हें पूछ रहा है maximum. If you want the number of people to be maximum, then the maximum number of people who are standing ahead of Pinky. For maximum तुम्हें x को maximize करना पड़ेगा. यहाँ पे x का maximum value 37 हो सकता है. So I'll take x as 37, because if x is less than 37.375, it can be 37, 36, 35, 34, 32, 30 ऐसा करके चलेगा. But I want it to be maximum. तो मेरा possible range में x का maximum value is 37. So if x is 37, then the number of people standing ahead of Pinky, 3x, कितना होगा ना, 3 into 37, which is 111. Okay, 3 into 37. Very simple question and very easy to understand also. Linear inequality का ये question था, from linear inequality. So you see last के 7 questions and this question also. I think all these questions were solvable. तो यहीं पे ही तुम्हारे 8 questions तुम्हें मिल गए हैं already. आगे भी बहुत सारे easy questions थे. So in my opinion, the questions were not very challenging for someone
who has solved questions from all chapters. I'm not saying who is an expert from all chapters, who has solved questions from all chapters. You have read the concept of every chapter. You'll find at least 15 questions which you could have solved easily. Okay, if you are not that efficient and very good in maths, as people always tell this, that I'm not good in maths. If you feel that you are not good in maths, still there were 12 questions that we could have easily solved. At the end of the third video, I'll show you the list, which are the questions you should have gone for definitely, which are the questions maybe you could have skipped because of the length of calculation, or let us say the critical portion of the concept, जो रीजनिंग पार्ट उसका होता है कि किस वे में इसको सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन चैलेंजिंग थे एंड यू शुड नॉट हैव सॉल्व्ड. दैट एनालिसिस आई विल डू एट द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट, सो डू वेट फॉर द थर्ड पार्ट. ठीक है, बट आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का क्वेश्चन है. प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट. अंकिता buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts and 6 kg almonds. So 4 kg cashews plus 14 kg peanuts and 6 kg almonds. She has bought this much. When the cost price, यहाँ पे बोल रहा है cost price of 7 kg of cashews is same as the cost price of 30 kg of peanuts is same as the cost price of 9 kg of almonds. What I'll do is, इनको equate करने के लिए, because ये तीनों का cost price same है but their quantities are not same, तो इनको equate करने के लिए I'll take a number 7, 30 and 9. 7, 30 and 9 को लेके maybe I'll take it as 630x. Why did I take 630? Basically LCM of 7, 30 and 9. So I get 630. You can take any number. तुम x लेके भी solve कर सकते हो, but unnecessary fraction आएगा. So let us take a number. अगर assume कर ही सकते हैं, this is a very important skill that you need to learn while solving questions. If you can assume, why not assume something which will make your calculations easier? तो ये लेने से फायदा क्या हुआ देखो. 7 kg like cashews का cost is 630x. So that means I can say 1 kg cashew, the cost price is like 90x. Similarly, 1 kg peanut, the cost price is 21x, and 1 kg almond, the cost price is like 70x. And she is buying this much, तो उसका total cost price निकाल लेते हैं. Total cost price will be how much? Let us calculate the total cost price. So 4 into 90x plus 14 into 21x plus 70 into 6x. क्योंकि उतना kg, ये 1 kg का पर kg का है, तो जितना kg into that, so 4 into 90, this will come as 360x. 14 into 21, 1 carry 4, 14 to 28, 4, sorry उल्टा लिखा मैं, 4 carry 1 होगा. 21 into 14, 294 बेसिकली आएगा, ये 294x and this is like 420x. तो ये तीनों को तुम ऐड कर लोगे. 420 plus this is like 780, 20 ऐड कर दिया तो 800, तो I'll get it as 1074x. This is the total cost price and ये x के टर्म्स पे रहा because हमें पता नहीं कितना she has spent. Okay, now 6C mixes all these three nuts and marks a price in order to make a profit of 1752. Now she expects to make a profit of 1752. ठीक है, बट अभी क्या कर रही है? नाउ दिस इज वेयर द क्वेश्चन गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. इतना उसको प्रॉफिट, अगर वो मार्क प्राइस पे सेल करती, जितना भी मार्क प्राइस, वी डोंट नो व्हाट द मार्क प्राइस इज, कुछ तो एक मार्क प्राइस उसने सेट किया, वेयर शी एक्सपेक्ट्स अ प्रॉफिट, पूरा मिक्सचर सेल करके 1752. इतना प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रही है. शी सेल्स 4 kg एट मार्क प्राइस एंड द रिमेनिंग एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. तो इसको मैं ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? पूरा तो सारा लॉट उसने डिस्काउंट पे सेल नहीं किया. शी इज सेलिंग 4 kg at mark price and the rest at discount. तो टोटल कितना kg हो गया? यहाँ पे टोटल क्वांटिटी देख लेते हैं. इट इज 4 plus 14 plus 6, तो 24 kg. दैट मीन्स आउट ऑफ 24 kg, 4 kg 0% डिस्काउंट में, वेर एज 20 kg 20% डिस्काउंट में. तो व्हाट इज द ओवरऑल डिस्काउंट? समझ पा रहे हो गेम क्या है? ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा?
4 kg 0% डिस्काउंट, 20 kg 20% डिस्काउंट. व्हाट इज माय ओवरऑल डिस्काउंट? उसको सॉल्व करने के लिए आई नीड एलिगेशन. हियर आई विल अप्लाई एलिगेशन. अगर तुम एलिगेशन अप्लाई करोगे, on one part I have 0% discount, on the other part I have 20% discount. 0% discount पे 4 kg and here it is 20 kg. So this ratio is basically 1:5. So allegation में it gets interchanged and becomes 5:1. So total this thing becomes 6 parts, and 6 parts is the gap between 0 and 20, which is 20, or I get 1 part is equal to 3.33. Hence this overall discount यहाँ पे कितना आएगा? ये 5 parts है, so this is like 16.66%. So my overall discount is 16.66%. This is my overall discount. Or I can basically write it as 1/6 of the mark price. ठीक है, तो ऐसे सोचो, अगर वो पूरा लॉट 24 kg जो उसका टोटल क्वांटिटी था, इफ शी वुड हैव सोल्ड ऑल दैट 24 kg एट 0% डिस्काउंट, कुछ भी डिस्काउंट नहीं देती टोटली, तो एट 0% डिस्काउंट अगर वो पूरा सेल करती, उसका प्रॉफिट वुड हैव बीन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन है 1752. बट बिकॉज उसने एक मिक्स डिस्काउंट दिया 16.66% ओवरऑल डिस्काउंट, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट reduces by how much? Now the profit reduced, thus making a total profit of 744. प्रॉफिट reduces बाय नहीं निकालते, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया एंड द न्यू प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया एंड न्यू प्रॉफिट is basically 744. So from 1752 जो 744 reduction in profit is basically because of the discount, जो कि है 1/6 of the mark price. So I can write 1/6 of my mark price is equal to 1752 minus 744, which is like 1008, which gives me my mark price is 1008 into 6, so 6048, 6048. This is your mark price, 6048. I hope this is making sense. Total mark price is this much, 6048. So cost price कितना आएगा? 6048 minus the initial profit that she expected, which was 1752. तो इसको अगर तुम माइनस करोगे, it comes somewhere around 4296. समझ रहे हो? मतलब जितना भी उसका ओवरऑल कॉस्ट था उस पे प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे. दैट इज व्हाई शी मार्क्ड अप द प्राइस. So whatever she had marked up, she was expecting that I'll gain a 1752 rupees profit. So mark price minus discount, usually selling price minus discount होता है, but this mark price is in a way selling price for Ankita because she didn't know that she's going to give discount. So this is 4296 and we had calculated cost price earlier, which is 1074x. Hence 1074x is equal to 4296, which gives my x as 4. Once you get x as 4, अभी तो आंसर इजीली आ जाएगा. क्या निकालना है क्वेश्चन में? Let us see. Question is asking us to find the amount in rupees that she had spent in buying almonds. So 6 kg of almonds, so 420x. So almonds के लिए कितना अमाउंट? 420x, which is 420 into 4, so 1680 rupees. ओके, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आई विल से, नॉट वेरी डायरेक्ट. ऐसे दो क्वेश्चंस थे प्रॉफिट लॉस का, नॉट डिफिकल्ट, लिटिल लेंथी. ओके, लिटिल लेंथी. ऐसा नहीं कि पुट द फॉर्मूला एंड 30 सेकंड्स में इसका आंसर आएगा. आ सकता है इफ यू आर वेरी एफिशिएंट इन दिस चैप्टर, बट इफ नॉट 2 मिनट के अंदर तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए. सो इट्स अ डूएबल क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू हैव प्रॉपर क्लैरिटी ऑफ दिस चैप्टर. एल्स यू मे कीप इट इन राउंड 2. जो राउंड 1 राउंड 2 स्ट्रैटेजी हम करते हैं व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, you may keep this for a round 2 question. Okay, difficult तो नहीं है, doable, but थोड़ा time taking है. But I hope all of you got an idea. Reading the question carefully is extremely crucial when you are giving the exam. A lot of mistakes happen just because we don't read the question properly. We are in a hurry and गलत पढ़ लेते हैं question को, एक भी word कहीं पे इधर उधर हो जाता है, तो our thinking goes wrong. If you are going with a wrong thinking about the question, how can your approach be correct?
Okay, even if you don't solve a question, that's fine, but don't read the question wrong. वैसे मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए. अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट क्वेश्चन गलत पढ़ के नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, लेट्स नॉट डू दैट, बिकॉज इतना एफर्ट्स हम पुट करके एग्जाम में जाएंगे एंड वहां पे बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और फॉर एनी रीजन इफ यू आर नॉट रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली, तो फिर उसमें तुम्हारा ही लॉस होगा. ओके, ऑलवेज फोकस एंड प्रायोरिटाइज ऑन रीडिंग द क्वेश्चन करेक्टली. So hope all of you are clear with this. Let us go to the next one. Modulus, kind of pretty direct question. Modulus का very good question on modulus, and ये logic से modulus में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है modulus. And before explaining this, just a quick concept. Modulus जब हम वीडियो बनाएंगे तो I'll detail में I'll explain what are the different types of, 3-4 टाइप का क्वेश्चन modulus में आता है. If you solve those 4 types, entire modulus is in your hand. In the exam, क्वेश्चन देख के you can decide किस पैटर्न में होगा, किस अप्रोच में होगा, मेरे से बनेगा या नहीं बनेगा. You don't have to try and experiment in the exam. तो सिंपल सा लॉजिक है that mod x plus k या mod x minus k में लिखता हूं, mod x minus k, mod x minus k, it is the distance of the point x from the point k. So we will treat modulus as distance. Mod x minus k is the distance of the point x from the point k. For an example, I'll take mod x minus 1. तो देखो नंबर लाइन में if I put this as 1 and maybe take x as 5, so what is the distance of the point 5 from the point 1? 4. तो mod 5 minus 1 देखो आ रहा है 4. तो मॉडुलस का जो आउटपुट आएगा that is the distance of the point x from the point 1, and this 1 is called as your boundary point. Boundary point means the point at which a modulus becomes 0. बस इतना ही कॉन्सेप्ट है. अगर ये क्लियरली समझे, आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो हियर वी हैव द इक्वेशन mod x plus a plus mod x minus 1 is equal to 2. So I have two boundary points, minus a and 1, and the equation has to be 2. That means I'll take two distances and the sum of those two distances is 2. How many values, or what is the largest value of a for which this has infinite number of solutions? Now think about this. अगर तुम ये क्वेश्चन में if you take this as minus 1, so any value of x in between this becomes mod x plus 1 and this becomes mod x minus 1. Distance of the point x from point minus 1, distance of the point x from the point 1, and what is the sum of these two distances? Mod x plus 1 plus mod x minus 1 is equal to 2. तो इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, एंड x कैन बी एनीथिंग बिटवीन -1 and 1. x could be any number between -1 and 1. thus infinite values आ ही रहा है, any real number, infinite real values I can write. so x can be any real number between -1 and 1. so that means mod x plus 1 मतलब a का वैल्यू 1 लेंगे. यहाँ पे -1 मत ले लेना, माइनस a इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1. ये भी थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाता है कभी कभार जल्दबाजी में. क्वेश्चन समझ आ गया, यू हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली, बट एंड में गलत हो जाता है, तो थोड़ा बी केयरफुल, एंड दैट्स व्हाई -1 इज आल्सो गिवन. So if I take a as 1 here, so minus a becomes -1. -1 and 1 के बीच में अगर मैं x ले रहा हूँ, उसका सम ऑलवेज 2 आएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x. तो बेसिकली क्या होगा, x को थोड़ा तुम लेफ्ट में लाओगे, अगर थोड़ा लेफ्ट में आएगा दिस कंपोनेंट विल रिड्यूस whereas this component will increase but their sum will remain constant. ठीक है, सिमिलरली x को अगर तुम राइट में लेते हो, mod x plus 1 will increase, mod x minus 1 will decrease, but the sum remains constant, and thus there are infinite real values of x in between -1 and 1. Again a very conceptual question modulus का. if you have covered modulus, तो ये category of questions तो modulus में करना ही करना है. okay, so for prepared candidates this again becomes a must solve question. Honestly, the questions were not very challenging for someone who has really covered the chapters in a very structured and systematic way. What happens is whenever we are preparing for the exam or we are reading a chapter, किस वे में उसको सोचना चाहिए. एक तो चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, फिर एक स्ट्रक्चर होता है, that what are the different types of questions that have been asked, and that's why where previous year questions they play a very vital role, because solving previous year questions it gives you a window or to think on what are the types of questions that have been asked from this particular topic,
in what manner and till what depth should I think about the topics, should I work on my concepts, and should I work on my approach. And then you will have that clarity of thought in the exam. Should I solve this? If yes, how? If how much time? So that is the proper selection process. It's not like I'll try every question at random and हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो problem है. That's a very simple like a disastrous way of approaching the exam, because that way में तुम कभी आगे जाके ज़्यादा score कर नहीं सकते. And the smart candidates won't ever do this mistake. So if you are preparing now, ये mindset अभी से लाओ. That मैं question पढ़ के अगर मेरे mind में approach नहीं आ रहा है, that means I have not really taken hold of the chapter. What should I do? Focus on small things initially. Okay, don't think of it as a very big exam and I need to do extraordinary things to crack this. You need to do things in a simple and correct manner from the beginning. सारे चीजों का fundamental समझो, fundamental. Okay, basics. Always focus on the basics part, because that's what will take you a long way. Always focus on the basics part. Okay. Hope this question is clear. Let's take a look at this one. Again, kind of easy this one. Trapezoid का question है. ABCD is a trapezium and AD is parallel to BC. BC is 3 cm, AD is 8 cm. And ऊपर से एक angle दे दिया 90 degrees. So the trapezium will look something like this. Multiple ways to solve this, but BC AD, this is like 3 cm and this is like 8 cm, and this angle BAD, this angle is 90 degrees, so this will be 90 degrees also. So I can write H is equal to the height is basically BA, height becomes BA. तो ट्रपेजियम का अगेन ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस इज H. So by that logic, this thing becomes 3 cm and this thing becomes 5 cm, because total तो 8 cm है. So this part becomes H square plus 5 square का square root. Now question में we have been given the perimeter. So we basically have got all sides. So perimeter is equal to 36. This implies 3 plus 8 plus H square plus 5 square का square root. This is equal to 36. This implies H plus H square plus 25 का square root is 11. तो ये आता है 25. और H square plus 25 का square root is basically 25 minus H. Now squaring both sides, दोनों sides को तुम square कर लो. If you square both the sides, this is what you will get. You will get H square plus 25 is equal to 25 square 625 plus H square minus 50H. So H square gets cancelled out. You get 50H is equal to 625, which gives H as 600. 25 minus हो जाएगा ना, तो 50H is 600. Very simple question, very simple question. 50H अगर तुम्हारा 600 आ रहा है, तो H यहाँ पे आ जाएगा 12. Once you know the height, then it's very easy to calculate the area. So area is half into height into sum of parallel sides. So half into height is 12, sum of parallel sides is 3 plus 8. So 66 square centimeter. Standard question on trapezium. जब भी trapezium आएगा ऐसे ही solve होता है. Most of the trapezoid questions are solved in this way. Drop a perpendicular, Pythagoras यूज होता है. तो trapezium जब पढ़ेंगे या तुम जब खुद प्रैक्टिस कर रहे होगे, solve some 10-15 questions based on trapezium. You will get a framework in your mind how to think on such questions. That is what preparedness is all about. Okay, kind of very simple question. Let's take a look at this one. ये भी आ गया greatest integer. Now if you would have solved previous questions, मतलब अभी जो 23 के लिए देख रहे हो, maybe at this point you haven't, but exactly something like this came back in that exam, that 2008 में ऐसा question है. ठीक है, तो वही लॉजिक यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे तो ये आंसर बहुत इजीली आ सकता है. So sum of n is equal to 1 till n, greatest integer of 1 by 5 plus n by 25, this should be 25. That means basically n को पहले 1 पुट करूंगा, फिर 2, then 3, then 4, then 5 and till कितना तक ऐसा n लेंगे such that this sum becomes 25. Now think about this.
हियर वी आर यूजिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, दिस इज बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दिया। So that means starting from 0 till 0.9999 अगर लेते रहोगे इसका वैल्यू 0 ही आएगा। जब तक वो 0 पॉइंट समथिंग रहेगा उसका वैल्यू 0 आता रहेगा। गेट सम वैल्यू यू शुड एटलीस्ट हैव 1, उसको 1 बनाना पड़ेगा। Now this 1 by 5 is basically 0.2, so this should be at least 0.8 to get some value, नहीं तो फिर तो 0 आता ही रहेगा, क्योंकि 0.2 प्लस 0.8 1 आएगा, तो वहां से तुम्हारा वैल्यूज आना स्टार्ट होगा, नहीं तो 0 0 0 हमेशा आता रहेगा। So if n by 25 is greater than equal to 0.8, n का वैल्यू कितना आ जाता है? 25 into 0.8, n का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 20। n का वैल्यू 20 आ जाता है, एंड n जब मैं 20 लेता हूँ वहां पे मेरा 1 आएगा, ठीक है। बट 20 से तो नहीं होगा, मुझे और भी वैल्यूज चाहिए। n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब 20 से मेरा 1 वैल्यू आना स्टार्ट होगा, टिल कितना, मतलब फॉर n इज इक्वल टू 21 कैसा आएगा वैल्यू, या 20 तुम अगर लेते हो, चेक कर लो पहले, 1 by 5 plus 20 by 25, you will get this value as 1। Similarly n को अगर मैं 21 लेता हूँ, it is like 1 by 5 plus 21 by 25, तो it will be 1 point something and again 1। तो ऐसा करके तुम्हारा वैल्यूज आना स्टार्ट होगा। तो ऐसा 20 लिया तो 20 तक आएगा, जैसे मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 20 लिखता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो ऐसा कितना तक लोगे n को, क्योंकि तुम्हें 25 चाहिए। तो 25 मतलब मैं 20 से कैलकुलेट 25 वैल्यूज, 20 से 25 वैल्यूज कैलकुलेट किया, मतलब n इक्वल टू 44 आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं, 1 by 5 plus 44 by 25, so this is like 1 by 5 को I'll write it as 5 by 25 plus 44 by 25, so this basically becomes 49 by 25, so again it is like 1 point something which will again be 1। तो मैं from 20 till 44 अगर लेता हूँ, I'll get 125 times, एवरी टाइम 1 आएगा, n इक्वल टू 20 से लेके 21 22 23 24 ऐसा करके n 44 तक भी लेते हो तो तुम्हारा वैल्यू 1 ही आ रहा है। तो 25 टाइम्स 1 विल बी 25, दैट मीन्स हेंस n शुड बी 44। मुझे 1 से लेके 44 तक जाना है, दैट इज आंसर। तो लेवल 2 क्वेश्चन डेफिनेटली, एंड यू शुड हैव सॉल्व्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये क्वेश्चन बिफोर, तभी जाके इसको अटेम्प्ट ले सकते थे इन द एग्जाम। ZAT 2008 में आई रिपीट अगेन ऐसा एक क्वेश्चन आया था, यू कैन चेक इट आउट, एंड इफ यू हैव सॉल्व दोस क्वेश्चंस, क्योंकि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, ओके, वन बेस्ड ऑन दिस, वन बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट एंड वन बेस्ड ऑन कैलकुलेटिंग द वैल्यूज। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैसे तुमने सॉल्व किया होगा तो यू विल एग्जैक्टली नो हाउ टू अप्रोच दिस, but I hope all of you got an idea. If you have zero idea about greatest integer, then wait till you cover greatest integer function. If you are watching this video right now, if you would be watching this, let's say 6 months 8 months down the line, so I hope that you would have covered greatest integer function by then and you can relate to what we are solving here. Okay, let's take a look at this simple question on ratio. ठीक है, ratio topic का काफी simple question है। In a village, the ratio of the number of males to females, so there's a village where we have males and females, and the ratio is 5:4, so male is 5 parts, female is 4 parts। Now again the ratio of the number of literate males, तो literate and illiterate वैसे करके इनको categorize करेंगे, female में भी literate and illiterate। तो ratio of number of literate males to literate females 2:3, तो इसको अगर मैं 2x ले रहा हूँ, this is like 3x, and the ratio of number of illiterate males to illiterate females is 4:3। अब इसको 4x मत लेना, इसको 4y लेना पड़ेगा, a different variable, 2x 3x 4y and 3y।
बोल रहा है 3600 males in the village are literate. So 3600 males in the village are literate. That means basically question is saying 2x is equal to 3600. This gives me x as 1800. So this becomes 3600 and this becomes 5400. तो अभी रेशियो आ जाएगा 3600 plus 4y. This is the total number of males. 5400 plus 3y, total number of females, and total male to total female ratio is 5:4. बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, y आ जाएगा. तो 14400 plus 16y is equal to 24 into 5 2700 plus 15y. So you get y as 27,000 minus 14400. So 270 minus 140 is basically 130. तो 12600 आ जाता है. तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, एंड टोटल फीमेल्स is 5400 plus 3 times y, 3 into 12600. 5400 plus this is like 37800, so 43200. इससे बेसिक क्वेश्चन रेशियो का हो नहीं सकता. 43200 एंड दीज आर लाइक मस्ट सॉल्व क्वेश्चंस इन द एग्जाम. ये चैप्टर्स में इतने स्ट्रांग होने चाहिए हमको दैट एनी क्वेश्चन वी शुड बी एबल टू सॉल्व वेरी इजीली, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, बहुत बहुत मैटर करता है. अगर इसको तुम सही से अप्रोच कर पाए एंड इनको सॉल्व किए, दीज आर लाइक बोनस इन द एग्जाम. एंड अभी तक अगर पहला वीडियो एंड इसको कंबाइन करेंगे 13 से आई थिंक 10 क्वेश्चंस तो सबको करने चाहिए till this. And the trick is not to be good in every chapter. The trick is to cover every chapter. अगर सिर्फ कवर ही करते हो सारे चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको सीखते हो, दैट इस चैप्टर में इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नेचुरली इजी फॉर मी. दैट क्वेश्चन थोड़ा मेरे को चैलेंजिंग लगता है, बट एटलीस्ट उतना पता तो है. आई एम अवेयर ऑफ माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. दैट विल मेक मी अ बेटर डिसीजन मेकर इन द एग्जाम, एंड दैट स्किल इज वेरी क्रूशियल टू स्कोर हाई. Okay, again another question on profit loss discount. Let us see this. Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice. Again a little lengthy ये वाला question भी. तो 110 kg का वो syrup खरीदता है and 120 kg का juice. Syrup being 20% less costly. तो अगर मैं cost देखता हूँ, तो अगर मैं जूस को 100x ले रहा हूँ, सिरप 20% लेस कॉस्टली, 20% लेस कॉस्टली, तो इसको 80x. अब जब इसको तुम सेल करोगे, वाइल सेलिंग, देखो सेलिंग में क्या हो रहा है, 10 kg ऑफ सिरप, तो तुम 10 kg सिरप सेल किए एट 10% प्रॉफिट. तो इसमें 10% प्रॉफिट अगर ऐड किया मैं, तो इट बिकम्स 88x. 10% ऑफ 80 इज 8, तो 88x. So this gives me 880x. And 20 kg of juice. 20 kg of juice had a 20% profit. So ये 120x. So 20 into 120, 12 to the 2400. तो इतना मेरे को सेलिंग प्राइस मिला अगर मैं प्रॉफिट में सेल कर रहा हूँ. मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस, और कितना रिमेनिंग रहा, आई एम लेफ्ट विथ 100 kg ऑफ सिरप एंड 100 kg ऑफ जूस. ये जो रिमेनिंग मिक्सचर है, इसका सेलिंग प्राइस एट 308.32 रुपीज पर केजी. मतलब ये 200 kg को इतने में सेल किया. तो आई कैन राइट टोटल सेलिंग प्राइस ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, आई जस्ट ऐड दिस 880x प्लस 2400x प्लस ये 200 kg को मैं सेल कर रहा हूँ 308.32. तो 800, 2400, 3200, so 3280x plus 30832, so I get 61664. इतना रुपीस. दिस इज माई टोटल सेलिंग प्राइस. मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, जिस सिंपल कॉस्ट लिया, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया, सेलिंग प्राइस निकाला, ऐड किया, दैट इज इट.
नथिंग डिफिकल्ट. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. एंड मैंने 100x इसीलिए लिया सो दैट उसका परसेंटेज लेना इजी होगा. अब बोल रहा है ही मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%. ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%. उसको यहाँ पे करते हैं. ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस? 110 kg of syrup at 80x and plus 120 kg of juice at 100x. So this is like 8800x plus 12,000x. So you get around 20,800x. This is the total cost price. And इस पे overall 64% profit. Okay, 64% profit किए. This implies 64% of this. जो भी आएगा मैं टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकता हूँ एज 1.64 इंटू 20,800x. ओके, तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे यू विल गेट द टोटल सेलिंग प्राइस. समझ आ रहा है? क्योंकि 64% प्रॉफिट है, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द टोटल सेलिंग प्राइस. तो ये आता है समथिंग अराउंड 34112x. Excuse me. So this is the total selling price. If I look at from the cost side, cost plus profit, this gives me the total selling price. I have also received the total selling price on this part. तो बस दोनों को इक्वेट करना है. 3280x plus 61664. This is equal to 34112x. तो इसको सॉल्व करके x निकालना है. If you solve, you'll get x as 2. थोड़ा कैलकुलेशन लेंगे है, दैट इज इट. बट कॉन्सेप्ट वाइज या लॉजिक वाइज काफी सिंपल एंड डायरेक्ट है, बट कैलकुलेशन है इसमें. नॉट सिंपल नंबर, बट x इक्वल टू 2 आया. इफ x इज इक्वल टू 2 देन अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप. सिरप का कॉस्ट प्राइस इज 80x. तो बस हो गया. एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप 80 into 2 you get 160 rupees. Data question 160 rupees per kg. ऑल दो प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है बट लिटिल लेंथी. ये दोनों के दोनों प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन. तो अ लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट हेवीली ऑन अरिथमेटिक, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा फंस सकते हैं. यू थिंक लुक एट द ट्रेड ऑफ. ओके, ट्रेड ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्किपिंग दिस एंड मे बी सॉल्विंग 3-4 क्वेश्चन एट द सेम टाइम. तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आइडियली फॉर मी वुड बी राउंड 2. इसको राउंड 1 में करना ही नहीं है, राउंड 2 में करेंगे क्योंकि हमें पता है ये सॉल्व तो हो ही जाएगा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. तो पहले जो क्वेश्चन जल्दी बनेंगे उसको कर लेंगे so that I maximize my score in the exam. ठीक है, let's look at the last one. Let a and b be natural numbers. Very important this information. A and b natural numbers हैं and बोल रहे हैं यहाँ पे a square plus ab plus a is equal to 14. Again super easy question. अगर मैं a को 3 से start करता हूँ तो 3 square plus 3 into b plus 3. This is equal to 14 which gives you 9 plus 3. 12 plus 3b is equal to 14. This is not possible क्योंकि फिर b इंटीजर नहीं हो सकता. b को अगर 1 भी लेता हूँ नेचुरल नंबर तो 15 होता है. तो a कांट बी 3. मान लो मैं a को नेक्स्ट 2 लेता हूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस 2 इज इक्वल टू 14. तो 4 प्लस 2 6. तो 2b इज इक्वल टू 8 विच गिव्स मी b इज इक्वल टू 4. अब ये b इक्वल टू 4 को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है. 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए इज 2 प्लस 4 आता है 16 प्लस 4 20 प्लस 8. आई गेट 28. तो परफेक्टली सेटिस्फाइड. खत्म क्वेश्चन यहीं पे ही खत्म. ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 4 एंड ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी. तो 2 इंटू 2 प्लस 4 आई गेट 8 एज माई आंसर. सुपर इजी क्वेश्चन. इसमें कुछ आइडेंटिटी वगैरह फैक्टराइज नथिंग. नेचुरल नंबर बोल दिया वहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन सिंपल हो गया. एंड द रेंज इज सो लो 14 एंड स्क्वायर भी है तो या तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 1. यही 3 वैल्यूज हो सकते हैं. 3 में नहीं हो रहा, 2 में हो गया, खत्म बात. 30 सेकेंड्स 1 मिनट के अंदर यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. ओके, so first video was from question number 1 to 7. Second video was from 8 till 15. 7 more questions to go. We'll take it up in the third video.
that is it from my end for this video. Hope you guys like the questions and the way we have like explained these questions. If you have watched this so far, do subscribe to the Aptitude Club channel and like the video. Share it with your friends who are preparing for CAT 2023 or other management entrance tests as well. And this is a new channel, and I'm trying to put videos regularly so that it will help you in your CAT preparation journey, be it from quants or LRD. आगे जाके my insights on verbal I'll try and share on this channel, so that every day you will find some content related to your CAT preparation. Thank you once again for watching this video, and we'll meet again soon in the next session. Till then, keep studying, keep solving. Have a nice day, everyone. Bye bye.